Come near mic, roll number 5. Tell me how living organisms get energy. How do you get energy, beta? By eating food. बिल्कुल ठीक है. How living organisms get energy? Answer is, sit down, beta. Very good. So answer is by eating food. लिखते जाना है. Every question you have to write. ठीक है. Then next is Richardson. Richardson में question roll number 7. There will be no life if there is no sun. You know that. Although carnivores eat other animals. Explain how. Carnivores तो दूसरे जानवरों को खाते हैं. फिर भी हम कहते हैं वो सनलाइट में कैसे एनर्जी ले रहे हैं. Although they eat other animals. Richardson, roll number 7. Yes. How carnivores are dependent on sun for energy. They get vitamin D from the sun. बेटा vitamin D vitamin D energy नहीं दे रहा है. हाँ. अच्छा. Tell me, you here only tell me carnivores, for example, lion है. What does lion eat? And flesh of another animals. Other animals, for example, they eat goat. What does the goat eat? The plants. Plants. Yeah. How do plants synthesize food? With the help of Photosynthesis. Photosynthesis means light, in the presence of light. Sun. If there is no sunlight, will the plants survive? No. If there are no plants, will the goat survive? No. No. If goat does not survive or herbivores animals don't survive, will the carnivore animals get food? No. So the carnivores animals also are dependent on light, sunlight for energy, although indirectly. Yes or no? Yes. ठीक है. चलो बैठ लिख लो. Everybody write down. Carnivore animals eat herbivores animals. Eat herbivores. Pythagoras बेटा लिख लो. Eat herbivores. Second point लिखिए. Herbivores eat plants. Herbivores के spelling ठीक लिखना है. Herbivores eat plants. And plants get energy from sun. Plants get energy from sun for photosynthesis. Therefore, next line में लिखो therefore. Everybody write down therefore. Energy of sun is transferred. Energy of sun is transferred to carnivores through plants and herbivores. Energy of sun is transferred to carnivores through plants and herbivores. ठीक है. चल नेक्स्ट आ जाएंगे. नेक्स्ट, what is the role of carbon dioxide in addition to photosynthesis? ये कुछ I hope किसी सेक्शन ने हार्डी ने किया हुआ है, but still other have not done. So I am again asking, what is the role of carbon dioxide in addition to photosynthesis? Plants require carbon dioxide for photosynthesis, but what is the other role of carbon dioxide? Yes, Hardy has done. Who will tell me the answer from Hardy?
हार्डी में बेटा मिडिल रो में जो लास्ट सेकंड बेंच पे राइट साइड में बॉय बैठा है बेटा, आ जाओ। यस यस यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आओ, माइक ऑन करो और मुझे बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ, एक तो वो इट इज रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यू कैन से इफ देयर इज, कैमरा ऑन करो, आपने कैमरा ऑफ कर दिया, इफ देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड will we survive on earth? Then because the carbon dioxide is needed to plant to get the sunlight. दोबारा से बोलो, दोबारा, एक बार दोबारा से बोलो, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, Because carbon dioxide is needed to plant to get the sunlight. photosynthesis, that is absolutely correct, plants require, but is other function, आप बैठो, आप खड़े रहना 2 मिनट, देर इज वन गर्ल इन हार्डी, यस फर्स्ट बेंच पे, आ जाओ। Then because plants cannot survive without carbon dioxide and plants filter carbon dioxide and give us oxygen. एक ये तो हो गया, ये तो फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द अदर रोल, बैठो मैं बताती हूँ दोबारा से, आई एम टेलिंग अगेन, see here, very important because this concept will come in your further chapter, sit down बेटा, हार्डी बेटा बैठ जाओ पीछे से बॉय, है ना, बट सुनना है ध्यान से कि what is one is role of carbon dioxide in photosynthesis. So another answer है, another role of carbon dioxide is, remember that CO2 is a greenhouse gas, लिखना है ये। अब देखो ग्रीन हाउस का मतलब क्या है, लिसन हियर, ये हमारी अर्थ है, वेयर वी लिव, सबने इधर देखो, अभी पेन्स डाउन, लिसन हियर, वेयर वी लिव, अंदर नहीं हम रहते हैं, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ, हम जितने भी बर्ड्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, which live on the surface of the earth, remember that, ध्यान से इधर, सब छोड़ दो स्क्रीन की तरफ, everybody on the screen, then this surface of the earth, it is covered by a blanket, किसका blanket है ये, blanket of air, blanket of atmosphere, इससे कवर्ड है ये सारा, ये सिर्फ ये नहीं, यहां से लेकर यहां तक, ये सारा क्या है, दिस इज एटमॉस्फेयर, एंड वन ऑफ द कंपोनेंट इन एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड, एवरीबडी सी हियर, अब क्या है, नाउ व्हाट हैपेंस दैट दिस इज सन, ये सन है, सन की लाइट इस पे सरफेस पे आई, सन की रेडिएशन कहां पे गिर रही है, अर्थ के सरफेस, ओके, देन व्हाट हैपेंस, द रेडिएशन दे फॉल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड गोज बैक इन स्पेस, एटमॉस्फेयर से बाहर चली गई, ये तो स्पेस है, बट यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, दिस इज CO2, some radiations are trapped by carbon dioxide, कुछ सारी नहीं, कुछ रेडिएशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेती है अर्थ में, एंड इट हेल्प्स इन वार्मिंग ऑफ द अर्थ, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस which traps some, not all, some
solar radiations and helps in warming of Earth. तभी हम what we say nowadays, if CO2 is increasing, we are cutting trees, global warming, global warming. What is global warming? When there is more carbon dioxide, it will trap more radiations, which will increase, Earth's temperature, right? So carbon dioxide, so remember that if no carbon dioxide on Earth, then Earth would be a frozen planet. क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता, फ्रीज होती, एंड if there will be excess of CO2 on Earth, अगर बहुत ज्यादा होगा, the temperature, ये मैंने लिखा temperature will increase, and this is called as global warming. This is called as global warming. और आपने एक स्टार डाल के और पॉइंट लिख लेना है. Plants maintain CO2 levels on. If we cut plants, then the level will be disturbed and there occurs global warming. Very important, because this is the point of concern for the environmentalist as well as for the common person. आजकल कितनी गर्मी होती है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? One of the reason is that we are constantly cutting trees for building factories, for building houses, for building big societies, for having wood. That's why CO2 level is increasing day by day. All done? चलो, next आते हैं. अगर किसी का रह गया, we will come again to this slide. So next, लिखिए जल्दी से. There are 3 plants, plant A, plant B, plant C. Write down and write down here. Which are the photosynthetic plants in plant A, plant B, plant C? Write down. Thales ने इसके आंसर मुझे बताना है, बट पहले लिख लो. Thales, roll number 14. Roll number 14, Thales. आ जाओ बेटा, माइक ऑन करो and tell me. In plant A, where photosynthesis occurs? Stem, leaves or both? पहले माइक ऑन करो बेटा. हाँ, बोलिए.
in plant A, which parts perform photosynthesis? Only stem, only leaves, or both stem and leaves? जोर से बोलो बेटा. Yes. हाँ. बेटा मुझे सुन रहा है, सिर्फ आपने मुझे आंसर देना है बेटा. फेल्स. Pascal, good afternoon. I hope Pascal, am I audible? Raise your hands. Pascal, अपना हाथ खड़ा करो अगर मेरी आवाज आ रही है. Okay, hands down, hands down. Tails में somebody else. Roll number 15. Pascal, right on this. हाँ जी, roll number 15. Tails. Yes, tell me. हाँ जी. Is it stem की leaves? Leaves. Not stem. बेटा, if बैठो. Anybody else from Thales who want to give me answer? Yes. Middle row में पीछे जल्दी से आओ. Both stem and leaves. Both stem and leaves. Very good. Because both are green. Green means they have chlorophyll. Right? So here we can say both. Both A and B. Sorry, not A and B, both stem and leaves. Then, next is Pythagoras. Pythagoras, beta. Yes. Somebody, ma'am, किसी को करो. भेजो जरा माइक पे. बेटा, yes, you come. Tell me, in plant B, which part perform photosynthesis? Only leaf. Yes, leaves. Very good. बैठो बेटा. Then Pascal में. Pascal, tell me, in plant C. Yes, raise your hands if anybody knows the answer. आ जाओ, आगे आओ. देखो माइक कहाँ पे है. माइक ऑन कीजिए. Come near the mic. Switch on the mic. हाँ, tell me the answer. Stem or leaves? Stem. You say stem, not leaves? No. नहीं बे. आप बैठो. पाइथागोरस में आंसर कुछ है. हाँ जी, पाइथागोरस. somebody come. आप खुद आओ. Stem. Stem. नहीं बेटा, देखो ध्यान से देखो इधर. आई एम टेलिंग, आप लिख लो, पहले आंसर लिख लीजिए, फिर इसमें बताते कैसे. Here also both stem and leaves. How stem and leaves both? I will tell you. Write on this. Here, even if the leaves are purple, even then they perform photosynthesis. Okay, done. चलिए आगे देखते हैं, फिर पता चलेगा. Why leaves are green? पहले मुझे इस यहां तक का आंसर बताइए. Why leaves are green? Yes, in Pascal. Pascal से हम शुरू करते हैं. Pascal में बेटा, yes, middle row में सेकेंड बेंच पे जो बॉय है, आ जाओ. Chlorophyll. Due to presence of chlorophyll. That's absolutely right. So green leaves. Then there are purple leaves.
Then some leaves are pink leaves also. We are talking about leaves only, nothing else. Remember that. So green leaves have abundant chlorophyll. Abundant means बहुत सारे. It doesn't mean that purple leaves and pink leaves don't have chlorophyll. They have chlorophyll. They have chlorophyll plus other pigments. यहाँ भी है less of other pigments. So leaves have chlorophyll plus other pigments. Pigments means which are differently colored. So these also have chlorophyll. Chlorophyll है ही है. But इसके साथ pink pigment भी है, इसके साथ purple pigment भी है, इसके साथ red pigment भी है. ठीक है? Chlorophyll plus other pigments in these leaves. Other pigments are more. And mask. Mask मतलब छुपा देते हैं. मास्क लगाते हैं हम. मास्क लगाते हैं तो क्या हम अपना नोज छुपा देते हैं. इसी तरह दे मास्क द कलर ऑफ क्लोरोफिल. मास्क मीन्स छुपा देना, हाइड कर देना. राइट डाउन. सो दीज लीव्स they also have chlorophyll, and when they have chlorophyll they perform photosynthesis also. Write down these. ये भी क्वेश्चन ये मत लिखो. Write down this only. So here write down, therefore green leaves purple leaves pink leaves all perform photosynthesis. क्योंकि क्लोरोफिल तो सबके पास ही है. हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? अगेन लीव्स की हम बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स. वी कांट से, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि स्टेम के पास ब्राउन कलर है तो उसके पास भी क्लोरोफिल होगी, ब्राउन कलर ने मास्क कर दिया. नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट लीव्स. डन. सो क्वेश्चन आपकी बुक में भी होगा, डू रेड कलर्ड लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? यस. सो डू दे हैव क्लोरोफिल? यस. इफ रेड लीव्स हैव क्लोरोफिल, then why they are red in color? Because they have more of other pigments. मास्क का अगर मतलब नहीं पता तो हिंदी पंजाबी में लिख लेना, छुपा देना. So that is why what we say here, leaves are purple. So what do we say? That stem as well as leaf both perform photosynthesis. Right? Then write down one more question. Do we have any plant? Do we have any plant? Any autotrophic plant लिखिए. Do we have any autotrophic plant whose leaves do not perform photosynthesis? Whose leaves
Napier, beta, very late. Camera control the beta. Please give me camera control if you can. Okay, thank you. So, my question is, can you name any plant can you name any autotrophic plants whose leaves do not perform photosynthesis? Yes, anybody? Can you name any photosynthetic autotrophic plant? In Pascal, there is one student. आजा बेटा जल्दी से आजा. Pascal, there is one student. भाग करा बेटा भाग कर. Come close to the mic. Switch on the mic. Mic on कर बेटा. Submit. हाँ अब बोलो. Cactus. Very good. Cactus. Very good. Very good. तो आंसर लिखिए cactus. Write down cactus. Why cactus? Leaves form woody spines and here stem green and photosynthetic. लिखते चलो. Cactus has woody spinous leaves and stem perform photosynthesis. Everybody, write down, write down. सबने लिखना है. Napier, write down. बेटा सबकी हमारा टाइम आई एम अनाउंसिंग अगेन टाइम ऑफ ऑल द क्लासेस इट स्टार्ट्स एट 12:40 सो प्लीज फ्रॉम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट द क्लास एट 12:40. ठीक है जी चलिए. सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ. अब ये क्वेश्चन लिखिए. राइट डाउन दिस क्वेश्चन. Why leaves are green? Why flowers are red? Based on the reflection or absorption of light. You must have studied reflection of light, absorption of light in class 6. Hardy, somebody from Hardy? मुझे बताइए लीव्स ग्रीन क्यों है? फ्लावर्स रेड क्यों है? हार्डी में आ जाओ. इसके बेसिस पे आपको बताना है. सॉरी आई एम सॉरी. क्योंकि ग्रीन के पास फर्स्ट होता है, स्टार्स के पास भी ऐसे पिगमेंट्स होते हैं तो उन्हें कलर चेंज हो जाते हैं. अच्छा मुझे एक चीज बताओ. पहले यहीं खड़े होना. मुझे इस बेसिस पे एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में कुछ बॉयज बैठे हैं. एक हार्डी में देयर इज वन बॉय हु इज वेयरिंग ग्रीन टी शर्ट. तो इसके टी शर्ट ग्रीन क्यों हमें नजर आ रही है? जो पटकास बच्चों ने बांधे हुए हैं वो ब्लू नजर आ रहा है. क्यों ब्लू है? कैन यू टेल? बैठो आप बैठे. आप बैठो बेटा. एनीबडी फ्रॉम नेपियर थेल्स? एनीबडी फ्रॉम थेल्स? आ जाओ बेटा थेल्स में. आजा 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 जल्दी से. बिकॉज क्लोरोफिल. हाँ दोबारा से. क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट्स. कौन सी लाइट
Do you know reflection? Reflection बाउंसिंग बैक. एक चीज इस पे गई, इसने उसको धक्का मार दिया, ये बाउंस बैक चली गई, ये अंदर नहीं गई. ठीक है, बैठो बेटा, बैठो बैठो. कोई भी चीज हमें क्यों कलर दिखता है? व्हाइट लाइट हमारे पे पड़ रही है. व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, यू नो. Leaves are green because the chlorophyll reflects green light. बाउंसिंग में बाहर भेजती है, वो धक्का मारती है, और जो हमारी आंखों को दिखती है. राइट? सो यू राइट डाउन chlorophyll. So leaves have chlorophyll. Which reflects green light. Therefore, leaves या chlorophyll are green in color. Likewise, if flowers reflect red light, then flowers appear red. Right? For example, what I had asked you, that boy is wearing green shirt. Why it appears green? Because it is reflecting green light. Boys are wearing blue patkas. Why they appear blue? Because blue color is reflected by that cloth. ठीक है? तो हमें कलर्स कौन से दिखते हैं? जो रिफ्लेक्ट होते हैं. Is it okay? So flowers are purple color because they are reflecting purple color. Flowers are, red color because they are reflecting red color. Chlorophyll is green because it is reflecting green light. Is it okay? Check. Next is right on. Sunlight. Sunlight is white light. Sunlight is white light. We have white. आपकी जो शर्ट है वो white है because it is reflecting all the colors. So sunlight is white light and it has 7 colors. You know, Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ये आपको पता है Vibgyor का. Everybody knows? Who knows this Vibgyor? Raise your hands. जिसको Vibgyor, जिसने सुना है, जिसको पता है, वो अपने हाथ खड़े करो जल्दी से. No, you don't know. चलिए, थोड़े से पास्कल में कुछ बच्चों को पता है. I am telling it. Okay. So 7 colors. ये एक कैसे हमने याद रखने की Vibgyor. क्या है? वायलेट, इंडिगो. कौन से 7 कलर्स है? ये 7 कलर्स. ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज and red. These are the 7 colors in white light. So white light has 7 colors. In which light? In 7 colors में से plant reflect green light totally. But which light makes photosynthesis occurs? Plants absorb. Absorb होता है अंदर लेना. Plants absorb maximum of blue and red light. Therefore, maximum photosynthesis occurs
occurs in, yeah, maximum photosynthesis consumes blue and red light. So फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट सबसे ज्यादा यूज हो रही है? ब्लू लाइट एंड रेड लाइट जो है सबसे ज्यादा यूज हो रही है। ग्रीन लाइट बिल्कुल यूज नहीं हो रही क्योंकि ग्रीन लाइट तो बाहर धक्का दे रहा है प्लांट। नोट डाउन, नोट डाउन। ये ग्राफ बनाओ, यहाँ पे है, अभी मैं रेट नहीं लिख रही हूँ बट यहाँ लिख रही हूँ अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस ताकि आपको इजी रहे। टाइप ऑफ लाइट, आपको बतानी है कौन सी लाइट। मैं अभी यहाँ पे बताती हूँ। You have to fill कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, इन तीनों में से बताना है ये क्या है। ये लाइट्स है, ठीक है, ए बी सी लाइट है। इस लाइट में इतनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, इस लाइट में इतनी हो रही है, और इस लाइट में इतनी हो रही है। यू हैव टू टेल मी कि व्हाट डज बी रिप्रेजेंट, व्हाट डज ए रिप्रेजेंट, व्हाट डज सी रिप्रेजेंट। यस, इन रिचर्डसन में फर्स्ट गर्ल, आजा बेटा। And A represents orange, green, and B represents red, C represents orange. Very good. That is true. So A represents green, minimum or no photosynthesis. B represents red, maximum photosynthesis. C represents orange. Very good. C represents orange. बना लो ये ग्राफ जल्दी से। ठीक है जी। So no or minimum photosynthesis in green light, whereas maximum photosynthesis in red light and blue light. ठीक है, हार्डी बेटा इधर देखो बॉयज, बाकी काम छोड़ दो। नाउ टेल मी functions of the following in photosynthesis. जल्दी से। इनके फंक्शन लिखो पहले आप, फिर मुझे बताओ। write down in your copy first. थेल्स में बेटा टुवर्ड्स विंडो, थर्ड बेंच पे जो स्टूडेंट बैठा है बेटा आ जाए। इन थेल्स टुवर्ड्स विंडो, आगे से तीसरे बेंच पे जो बच्चा बैठा है, कम कम क्लोज टू माइक, स्विच ऑन द माइक, टेल मी द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। What is the function of chlorophyll? Yes.
तो मुझे समझ नहीं है, थोड़ा सा दूर हो के, थोड़ा सा दूर हो और फिर बोलो। चलो आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो। Somebody from Napier. Napier, what is the function of chlorophyll in photosynthesis? Roll number 13, Napier. Roll number 13. 13 नहीं है तो 20 चाहिए। यस नेपियर। चलिए फिर मैं, अगर रोल नंबर नहीं मिले हुए नो प्रॉब्लम, मैम किसी भी स्टूडेंट को भेजो माइक पर। मुझे आवाज नहीं आ रही है नेपियर से। चलिए नो प्रॉब्लम। देन पाइथागोरस। पाइथागोरस में एक हाथ खड़ा है बेटा, मिडिल रो में लास्ट सेकंड बेंच पे है। हाँ, हाँ जी आ जाओ। green color to plants. It gives green color to plants. Any other. It can be sunlight to perform a photosynthesis. बिल्कुल ठीक है। सो क्लोरोफिल टू फंक्शंस, प्रोवाइड्स, लिखना है सबने, प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू लीव्स, एंड सेकंड इज absorbs sunlight. एंड राइट डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। पहले एक और पॉइंट लिखिए, यहाँ पे स्टार डाल के अलग से लिख लेना। इन बॉक्स राइट डाउन वन पॉइंट। Sunlight helps in formation of chlorophyll. And chlorophyll absorbs sunlight. If we keep the plant in shade, then the leaves become pale in color because there will be no synthesis. अगर हम प्लांट को शेड में रख देंगे तो जो लीव्स है वो पीले पड़ जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट सिंथेसाइज क्लोरोफिल। देन पास्कल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? आ जाइए इधर से, जिसने पहले नहीं आंसर दिया जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। समबडी कम क्विकली, जो पहले माइक पे पहुंचेगा वो आंसर दो, आ जाओ। जिसने पहले आंसर नहीं दिया भाग कराओ, माइक ऑन करो एंड टेल मी द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। उसके बाद पाइथागोरस ने रूट्स का देना है, माइक पे आ जाओ बस जल्दी से। पास्कल पहले, हाँ। To absorb carbon dioxide from the atmosphere. यस बिल्कुल ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स CO2 and it gives out oxygen. Stomata are like our nostrils, है ना, जिससे हवा अंदर जाती है और बाहर आती है, राइट।
We take in oxygen, give out carbon dioxide. Plants do opposite. They take in carbon dioxide, give out oxygen. Then, function of roots. You know that roots absorb water. Water का formula पता होना चाहिए सबको, H2O. And minerals. Minerals है जैसे आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, from soil. What is the function of xylem? Xylem is present in the stem. Xylem transports water and minerals from roots to leaves. तो यहाँ पे लिख लो, xylem are tubes in the stem. ये स्टेम है, स्टेम के अंदर these are the tubes. फ्लोएम भी ऐसी ही ट्यूब्स है. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट food from leaves to other parts of plant. जिस तरह हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स है, इसी तरह से प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम रूट से ऊपर लेके जा रहा है, फ्लोएम लीफ से नीचे लेके आ रहा है. बट आई टेल यू फ्लोएम मोर अबाउट फ्लोएम नेक्स्ट टाइम. बट अभी ये done. And what is the end product of photosynthesis? What occurs in photosynthesis? Carbon dioxide combines with water, right? To form in the presence of sunlight, chlorophyll and minerals. CHL is chlorophyll. Again मैं बता रही हूँ, आपने पूरा लिखना है. And minerals to form glucose. C6H12O6. This is glucose. So glucose is food. Plus oxygen. O2 is oxygen. Byproduct is waste product which is not used by plant of photosynthesis, जो बाहर निकाल देता है. क्या है? Yes, tell me. Which is the byproduct of photosynthesis? Pythagoras, tell me. हाँ जी, जो मैम के साथ स्टूडेंट बैठा हुआ है वो आ जाओ. Come quickly. भाग कर. Mic on. Oxygen. Very good. Oxygen is the byproduct because it is released outside as it is released outside. Which is the stored food? बनाया तो ये है प्लांट ने, but store कौन सा हुआ है? Yes, Richardson. Which is the stored food in plants? Any other student from Richardson? Not only one.
रोल नंबर 19, रोल नंबर 19 रिचर्डसन। अच्छा, एक लड़के का हाथ खड़ा है, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Ma'am, in the form of starch. बिल्कुल ठीक है, द स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स इज स्टार्च। सो व्हाट इज स्टार्च एक्चुअली? इफ दिस इज, एक ये मोती है, लेट अस से दिस इज अ बीड, दिस इज ग्लूकोज। और जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं, when they join with each other, when they join with each other, the structure formed is called as starch. And both are carbohydrates. लिख लेना है, both glucose and starch are carbohydrates. Glucose जो है उसको हम क्या लिखते हैं? Simple carbohydrate. And starch is the complex carbohydrate. Carbohydrates, you have heard about carbohydrates in class 6. Both glucose and starch are carbohydrates, but what is the difference? That glucose is the simple carbohydrate. Starch is a complex carbohydrate formed of many glucose molecules. Okay, I'm giving you 5 minutes. फटाफट से वर्कशीट, आई होप सबको मिल गई है वर्कशीट। डिड यू गेट वर्कशीट? रेज योर हैंड्स जिन सेक्शंस में वर्कशीट मिल गई। नेपियर में बेटा मैम देखें जरा, इनको वर्कशीट दीजिए प्लीज। ओके ओके, हैंड्स डाउन। नेपियर को छोड़कर सभी को मिल गई है, बाकी करो करो फटाफट से। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। यस किया है, जल्दी से सब माइक ऑन करते चलो। थेल्स में आ जाइए, रोल नंबर 1 एंड 2। थेल्स 1 एंड 2 जल्दी से करें। हाँ, लीव्स अपीयर ग्रीन एज दे। नेपियर सुन लेना, क्वेश्चन सुन लो अगर असाइनमेंट नहीं है। लीव्स अपीयर ग्रीन एज दे रिफ्लेक्ट, ट्रांसमिट, एब्जॉर्ब, रिफ्रैक्ट क्या करते हैं? लाइट। फर्स्ट ए ऑप्शन है, एज रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। बैठो बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पढ़ो जरा और बताओ मुझे। हार्डी में बताएंगे मुझे। रोल नंबर 3 आके मुझे बताएगा। रोल नंबर 3 पहले पढ़ लो फिर। हाँ जी, क्या आ जाएगा? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है बेटा? ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना। बैठो जरा मैं बता देती हूँ। ऑप्शन ए देखिए, क्लोरोफिल कंटेनिंग, नेपियर आप सुन लो, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स इन लीव्स एब्सॉर्ब सनलाइट, टेक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, take withdraws water and minerals through xylem and synthesize glucose by combining carbon dioxide and water. Option A is correct. Yes, question number 3, Pascal. Question number 3, Pascal. हाँ जी,
यस, मैम के साथ जो बच्चा बैठा है, आ जाओ, आप आ जाओ। द बॉय हु इज स्टैंडिंग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन रेड एंड ब्लू लाइट एज क्लोरोफिल। माइक कौन कर, हाँ। यहाँ बाजार एब्सॉर्ब, यस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, पाइथागोरस, क्वेश्चन नंबर 4। प्लांट्स विल शो मोर फोटोसिंथेसिस इफ। यस, हाँ जी, यस द गर्ल, हाँ जी बेटा। All of the above. Plant absorb more water if there is more CO2, if the temperature is more. So answer is all of these. Balanced chemical equation. बेटा याद रखना, नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी क्यों हम बैलेंस करते हैं। 6 CO2, 6 water, 1 glucose and 6 oxygen. I will tell you next time why we balance the equations. But this is the balanced equation. So answer is D option, delta. 6 CO2 plus 6 water plus light gives 1 glucose plus 6 oxygen. Yes. Who will tell me? अब ये मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन सी प्रोसेस है? इधर देखो पहले, इधर एवरीबॉडी सी हियर। फिजिकल प्रोसेस होती है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पेपर लिया, पेपर को हमने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, चाहे साइज चेंज हो गया बट रहा तो ये पेपर ही। इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। व्हेन वी च्यू फूड, फूड तो फूड ही रहा है, रोटी है तो रोटी ही तो च्यू कर रहे हैं हम, उसका कुछ हुआ तो है नहीं अभी। chewing of food is a physical process, but when new product is formed, for example burning हुई, वुड से क्या बन गई? ऐश बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। दिस इज ए केमिकल प्रोसेस, राइट। हम खाना बना रहे हैं, कच्ची सब्जी से पकी सब्जी, सॉफ्ट हो गया टेक्सचर, टेस्ट बदल गया, इट इज ए केमिकल प्रोसेस। फूड खराब हो जाता है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, माइक्रोब्स ग्रो कर गए, उसके अंदर नए केमिकल्स बन गए, केमिकल प्रोसेस। सो टेल मी, अब मुझे फिजिकल है कि केमिकल है, आपने ये बताना है मुझे। फोटोसिंथेसिस, टेल मी, 1 इज फिजिकल, 2 इज केमिकल। बताइए कौन सी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस? एवरीबॉडी रेज, 1 की 2, या 1 की 2, फिजिकल की केमिकल? टेल मी बाय फिंगर्स। नेपियर आप भी बताइए बेटा, फोटोसिंथेसिस फिजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस है? टेल मी विद योर फिंगर्स। इट्स ए केमिकल प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, लिखो। फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल प्रोसेस बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल एंड इट कंज्यूम्स एनर्जी। एंडो मीन्स अंदर लेना, ठीक है। यहां पे तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन, बी फोटोसिंथेसिस। नेपियर आप लिख लो बेटा अपनी कॉपी में, फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल प्रोसेस एज न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, एज न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 7, अगर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगी तो लीव्स विल बी येलो इन कलर। Leaves cannot do photosynthesis and leaves cannot absorb light. So all the above. Answer is D, all the above. अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यस कौन बता रहा है? एवरीबडी, किसमें से पूछेंगे? यस हार्डी में से। हार्डी, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, नेपियर सुनेंगे क्वेश्चन क्या है। रोहन विजिटेड कनाडा इन अक्टूबर, है ना?
ऑटम शुरू हो चुका है, ठंड शुरू हो चुकी है. He observed that as winters approach, the color of leaf changed from green to red or purple or yellow. This is because क्यों चेंज हुए कलर्स, क्या हो गया? हार्डी में बेटा, हार्डी में somebody else. Yes, the boy in the green shirt. The boy in the green. आजा बेटा. लीव्स का कलर क्यों चेंज हुआ? Less availability of sunlight, the amount of chlorophyll decreases and thus masking effect. बिल्कुल ठीक है. इट इज सी ऑप्शन. जब सर्दियों में धूप हो जाती है, क्लोरोफिल कम बनेगी, तो बाकी के पिगमेंट्स ग्रीन कलर को मास्क छुपा दे. मैम एक्सक्यूज मी. हाँ जी. डिपार्चर टाइम है. Pascal, I cannot understand. में आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है. In Napier section. इन नेपियर सेक्शन. अच्छा बेटा, अगर नेपियर में नहीं आ रही है तो उन्हीं के ही माइक में प्रॉब्लम है. उनको कहो कि उनका ही ऑडियो नहीं ठीक है, क्योंकि बाकी तो सभी सेक्शंस में आ रही है. तो नेपियर के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है. टेल देम, क्योंकि अब टाइम भी हमारे पास थोड़ा है, सो आई कांट स्टॉप. द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हैविंग पर्पल और रेड कलर्ड लीव. जो सर्दियों में जिनके लीव्स रेड और पर्पल हो जाते हैं, उनमें न्यूट्रिशन कैसी हो जाती है? यस, हु विल टेल? जल्दी से हाथ खड़ा करो. क्या उनमें क्लोरोफिल खत्म हो जाती है? नो, थोड़ी है क्लोरोफिल. तो कौन सी न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रोफिक ही होगी, चाहे रेड कलर लीव्स है. सो आंसर इज ऑटोट्रोफिक. यस, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर थेल्स में से. एनीबडी फ्रॉम थेल्स? क्वेश्चन नंबर 11. What is the role of photosynthesis in maintaining environmental health? Thales, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ. Come quickly. Very good. ऑप्शन ए बिल्कुल. environmental health controls air pollution, absorbing carbon dioxide. Very good. Question number 12. Leaves of plants are broad and flat. छोटे छोटे लीव्स नहीं है, बड़े बड़े फ्लैट होते हैं. वाई? टू इंक्रीज सरफेस एरिया. जितना ज्यादा एरिया होगा, उतनी ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब करेंगे. सो आंसर इज increase the surface area for absorbing more sunlight. क्वेश्चन नंबर 13 मैथमेटिकल है. अगर एक दिन में 10 ग्राम शुगर है, तो 30 डेज में कितना ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा? टेल मी. यस, पाइथागोरस. पाइथागोरस टुवर्ड्स वॉल. जो एक लड़की का हाथ खड़ा है, सेकंड और थर्ड बेंच पे था. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. 200 ग्राम्स. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक. द फूड नेक्स्ट इज पास्कल. पास्कल आपका नंबर आ गया है. द फूड फॉर्म्ड एंड फूड स्टोर्ड इन प्लांट्स इज. मुझे यहीं बैठे बैठे सम स्टोर. टेल मी. ए बी सी डी, कौन सी चॉइस? इट इज ग्लूकोज एंड स्टार्च. डी चॉइस है. फोर्थ, ग्लूकोज एंड स्टार्च. ग्लूकोज फॉर्म्ड, स्टोर्ड स्टार्च. स्टार्च इज फॉर्म्ड बाय रिचर्डसन. रिचर्डसन में बेटा टुवर्ड्स विंडो, लास्ट सेकंड बेंच पे जो बॉय है, आ जाओ. स्टार्च इज फॉर्म्ड फ्रॉम. कैसे बनता है स्टार्च? अपनी वर्कशीट लो बेटा. वर्कशीट से अगर आंसर कैसे बताओगे?
It is formed joining of various glucose molecules. Option A is correct. Joining of various glucose molecules. Why is starch? ग्लूकोज नहीं स्टोर होता बेटा, क्योंकि जैसे ही मेरी बात सुन लो, क्योंकि जैसे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, एक पानी बाहर में से एक वाटर बाहर निकल जाता है, तो इसलिए स्टार्च जो है वो ड्राई होता है। ग्लूकोज गीला गीला है, स्टार्च ड्राई है। ठीक है, तो आंसर इज स्टार्च इज कंपैक्ट, ड्राई होगा तो कंपैक्ट होगा, एंड स्टोर्स मोर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन स्मॉल स्पेस। थोड़ी जगह में बहुत ज्यादा ग्लूकोज को हम संभाल सकते। ठीक है, अब वन दैट लीव्स, लिखना है सबने, लीव्स synthesize food and transport it to roots. Suppose जो roots है, roots store food as starch. तो जब हम खाना नहीं बना रहे तो क्या होता है, जो पड़ा हुआ है, आपकी मम्मी ने सुबह की परौंठियां बनाई हुई है तो आप वो खा लेते हैं, जो पड़ा हुआ है वो खा लेते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है अब आ गया। ए गोट, क्वेश्चन नंबर 17, a goat eats away all the leaves of a small plant, however in a few days new leaves could be seen. कैसे? गोट ने तो सारे लीव्स खा लिए थे, प्लांट मर क्यों नहीं गया? Because it uses the stored food. Answer is by using reserve food. Answer is A. Beta, what is the difference? Remember that. Question is difference in composition of carbohydrates and proteins. क्या दोनों में क्या फर्क है? आंसर लिखो यहां पर। कार्बोहाइड्रेट्स हैव, क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब आपका डिपार्चर टाइम हो जाएगा, यू कैन टेल मी। प्रोटीन्स, proteins have, I'm writing carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen also. रिचर्डसन बॉयज बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ। तो अब plants absorb nitrogen from soil, adds nitrogen टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ नाइट्रोजन को ज्वाइन करते हैं एंड फॉर्म प्रोटीन।
ठीक है, विच एडिशनल कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड? रिचर्डसन इधर बेटा, which additional component is required for protein synthesis? Nitrogen. आई होप आपका जाने का टाइम हो गया, बस एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लें. Plants can synthesize carbohydrates by photosynthesis, but how do plants synthesize their proteins? It is option B, Bombay. Plants modify carbohydrates and add nitrogen to form protein. कैसे नाइट्रोजन लेते हैं, क्या करते हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम. इज इट ओके? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय.